श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है इस श्रीमद् We welcome all of you to class on Srimad Bhagavad-Gita. आज अध्ययन कर रहे हैं Today we are studying तृतीय अध्याय का third chapter, verse 39 on. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं Bhagavan Shri Krishna is answering Arjuna's question कि ऐसा क्यों होता है कि where इच्छा ना करते हुए Arjun had asked that पाप कर्म में प्रवृत्त why does a person engage in sin even भगवान without ने having कहा कि desired इसका for it? मूल कारण हमारी कामना है So Bhagavan explained that the main reason is our desires, our attachments to sense objects, करना चाहते हैं our उसके desire कारण ही to ऐसा होता है enjoy the और senses. उससे ऐसा क्यों होता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये कामना जो है And why it व्यक्ति के happens, he विवेक को explained that this desire, आवृत it कर लेती है, ढक लेती है। covers, it covers the discernment, the jnana for the person. तो मनुष्य And when jnana is covered, when discernment is सही covered, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। then the इसी person बात is को unable to स्पष्ट take रूप से correct भगवान decisions. बताते हैं आवृतम So ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हे अर्जुन यह काम translation, ज्ञानियों का नित्य O Arjuna, discernment is covered by this eternal enemy of the wise in the form of desire, ढक लेता है। which is insatiable like यहाँ fire. पर स्पष्ट रूप से वो बताते हैं कि So कैसे here he is telling very यह जो clearly कामना है that how this व्यक्ति के ज्ञान को ढकती है, desire, it covers the ज्ञान discernment of the person. हमारे विवेक से है। ये Here ज्ञान jnana को refers सही to सही किसी चीज को discernment. सही सही समझना
It means to और उसकी understand समझ anything बहुत as it अच्छे is. से आती And this है understanding कि is हम किसी possible विषय को through our देखते buddhi. हैं When we तो see उसके लिए any हमारे sense इंद्रियों का object, संपर्क विषय के then साथ first of all, और जब इंद्रियों का विषय के our साथ senses संपर्क होता है contact तो the सबसे पहले objects, and when the contact जो happens, अनुभूति होती है उसको निर्विकल्पक the ज्ञान बोलते हैं the experience that we get, that क्योंकि is इंद्रियां जो है वो nirvikalpa अपने आप gyan, को समझने में असमर्थ हैं because क्योंकि senses are उनको पता unable नहीं चलता है कि to ये वस्तु understand क्या the है। sense objects. So the senses do not जैसे आप understand what that थर्मोमीटर object को is. गर्म पानी में Like डाल दें if you तो if you थर्मामीटर put के a अंदर जो thermometer in hot होता water, है the गर्मी प्राप्त होती है mercury, it लेकिन expands. थर्मामीटर को इसका थोड़े ज्ञान होता है कि But कितना the thermometer does तापमान है not गर्म है या understand ठंडा है the temperature. तो व्यक्ति देख कर कहता है कि बहुत गर्म It है is बहुत the ठंडा human है being who sees and तो understands इंद्रियां तो that केवल he has उसको fever. So नापती हैं senses simply और measure, नापने में उनको ये पता नहीं होता है कि ये क्या है क्या नहीं है and while measuring, the senses तो themselves do इसलिए not उसको understand बुद्धि what it is or what it निर्विकल्पक is ज्ञान not. So that से jnana is हुआ called कुछ है nirvikalpa jnana, means that और जब something इसका is there. संपर्क मन से होता है And when the contact तो happens in the मन को mind, एक अनुभूति होती है सुख और दुख की then the mind gets an क्योंकि experience मन of के अंदर ये sukha गुण and है कि dukkha, किसके संपर्क happiness में and जब कुछ भी distress. आता है तो Because उससे mind has this quality कुछ that when वस्तुएं it अनुकूल contacts something, होती हैं और कुछ then either it प्रतिकूल will होती हैं be favorable or लेकिन उसको unfavorable. भी सही ये पता नहीं चलता है कि ये वस्तु है But क्या the mind doesn't understand क्योंकि properly इंद्रियों को तो ये केवल इतना पता चलता है कि कुछ है what it is. It is और in मन से senses ये at नहीं least पता चलता understand कि that ये something is अनुकूल there, है या प्रतिकूल है and जबकि है क्या mind understands whether it is favorable or unfavorable, तो उसको but पता what it चलाने के is, लिए it बुद्धि cannot की जरूरत understand. होती है So, in order to understand what तो it बुद्धि is, जो we है need उस the buddhi. अनुभूति को लेकर So, the और जो buddhi, पुराना it हमारे takes the experience संस्कार जो हमारे अंदर and बैठे हुए हैं उसके साथ में it वो उसको फिर तुलना करती है it मिलाती है starts it starts और उससे matching उसको एक with the नया latent ज्ञान samskaras मिलता of that object lying in the chitta, and और then it बुद्धि understands बताती है कि what ये it मेरे is. लिए अच्छा है या बुरा है क्योंकि Then केवल buddhi अनुकूल और conveys whether प्रतिकूल it is good or bad प्रतिकूल for देख के us, वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा because है simply being बुरा favorable है or unfavorable is not enough. उसका निर्णय बुद्धि देती है So buddhi takes the decision whether it और is जब good or बुद्धि bad for the अनुकूल होती है person. तो And if इसलिए your बुद्धि का buddhi काम has होता been है विवेक covered, so और the job of अभ्यास में buddhi, the role of buddhi is to मन do केवल discernment, संकल्प विकल्प to करता do है vivek. Mind simply does और sankalpa फिर and वो vikalpa. हमें समझ आता है कि ये वस्तु क्या It है just accepts or rejects. But then with है buddhi we क्या understand what it is. तो अगर हमारी बुद्धि जो है वो प्रभावित हो So जाए काम if से our buddhi प्रभावित होना becomes मतलब influenced by karma or desire, यानी कि जो चीज being जैसी है influenced वैसी उसको means ना दिखाए जो if चीज it अच्छी है becomes उसको बुरा distorted, दिखाए बुरी को if अच्छा the दिखाए buddhi निर्णय तो stops बुद्धि करती showing है objects as it is, because buddhi जीव takes को this कुछ चीज decision. देखते हैं मीठी लगती है तो जीव को तो अच्छा लगता है लेकिन If वो दूसरी we, चीज मेरे लिए when we लाभदायक है या taste नुकसानदायक something, है ये हमें बुद्धि से पता नहीं simply by चलता taste we do not understand तो whether it is इसको good or देखते bad हैं for किसी us. ने It is, we डायबिटीज का दवा understand that खाता by है तो buddhi. खाता है तो If अच्छा somebody लगता has है स्वाद उसको भी diabetes आता है and consumes some लेकिन अगर sweet वो बुद्धि का उपयोग food, करेगा तो then उसको he लगेगा also कि feels नहीं it अच्छा sweet. है But if he uses his buddhi, he understands that लेकिन it अगर is उसकी not good for बुद्धि me. कामना से ढकी हुई है But if his buddhi is covered कि by मैं इस karma वस्तु or का सेवन desire, करना चाहता हूँ तो फिर वो बुद्धि उसको बताएगी नहीं कि नहीं ये नुकसान है वो कहेगा नहीं फिर वो बुद्धि तर्क देगी कि क्यों खाना ठीक है वो then कहता कोई buddhi will बात नहीं not convey whether it is good or bad. थोड़ा मैं Then he will simply इंसुलिन का give इंजेक्शन लगा excuse लूंगा that I'll take some insulin आपका injection or शरीर some बहुत अच्छा हो tablet, जाता है and then he will तो इस start प्रकार giving the का जो logic कुछ that even if I take it तर्क देगी sometimes, हमको then what बुद्धि will कि वो happen? हमारी So ढकी हुई when the buddhi is covered by ढकने का मतलब desire, यही it है कि gives उसको this दिखाई kind of देता है logic. ज्ञानम एतेन एतेन मतलब काम रूपेण नित्य वैरिण दुष्पूरेण अनलेन च ये सारे इसी के विशेषण हैं So these are एतेन the काम same रूपेण adjectives. ये शत्रु जो है वो काम के रूप में आता है This enemy comes in our life as desire. इसलिए भी बताया था कि Bhagavan had ये told this हमारी बुद्धि earlier को ढकता also है that it जैसे covers our buddhi, धुआं अग्नि को ढकती है like धूल fire covers, like आदर्श smoke को ढक covers देती है fire, और बच्चा गर्भ में जेठ से dirt ढकता covers है mirror,
and the इसी प्रकार womb हमारी covers बुद्धि the भी embryo. बनती है इस काम रूप से। Similarly, desire काम covers the रूप शब्द buddhi. जो है इसका मूल अर्थ होता है जो अपने कामना के अनुसार अपना रूप बदल सके। Kamrup actually बात means समझ one रहे हैं? who can change his form according to desire. ऐसा It is मतलब called Kamrup. काम रूप। तो काम रूप वास्तव में असुरों को कहते हैं। So असुर होते actually, भी asuras are known बदल as लेते हैं Kamarup. Asuras स्वर्ग can से। change their form, like उसने सोच Marichi. लिया अपने आप को स्वर्ण का मृग बनाया, So he ठीक है ना, मृग मरीचिका। took the form of a golden deer. तो वो है तो मनुष्य है लेकिन उसने मृग का So रूप actually, he धारण is किया, a उसको बोलते हैं काम human, रूप। but he took the form of a golden तो ये deer. कामना So भी this is अनेक known as रूप में Kamarup. आती है, मतलब है तो So this स्वरूप Kamna desire appears in different forms. भावनी दिखती है Originally, असुर। it is a demon, it's Asura, जैसे but it था तो मरीच takes a रावण का very बाप, beautiful form. लेकिन Like Marich वास्तव में was वो Ravan's uncle, but he appeared as a golden और deer. उसके कारण जो है सीता जी का उन पर मन आ गया, And then Sita Devi मृग जी का। started desiring तो that इसी golden प्रकार deer. ये जो विषय हैं ये अच्छे Similarly, लगने लगते these हैं। sense objects they appear attractive to ये us तो यहाँ when काम our buddhi मतलब becomes कामना के covered रूप में जो by आते the हैं। kamna desire. और इनको कहा है कि ये नित्य वैरी हैं। And they have been addressed as Nitya यदि Vairi, वास्तव, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, eternal enemy. Because if our अर्थ चला गया, buddhi is lost, then our ये life बात is बार बार wasted. भगवान गीता में कहते Bhagavan हैं। पहले tells this again and again. He योग told के earlier also. हमने प्रवचन किया दूसरे अध्याय में, और बुद्धि से ही कहा कि इसी का प्रयोग करके आप इस दलदल से निकल सकते हो। And he also said that you can get out लेकिन of अगर वो this बुद्धि delusion by हमारी using buddhi only. ढक जाए, But if the buddhi ढक itself जाए, gets दूषित हो covered, जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो फिर if it becomes हमारा corrupt, उद्धार कैसे हो सकता है? then how can हम we इसी में be फंसे रहेंगे। saved? तो Then we इसलिए will इसे always remain नित्य caught in वैरी this. वही होता ना, That's why शत्रु it होता। is known as any, called addressed here as enemy, because enemy is one who harms us. जो आपके जीवन में कष्ट देता है उसी को वैरी बोलते हैं। Vairi is one who तो gives यही जो है inflicts suffering upon us. मूल कारण So है हमारे this is the main जीवन की reason हमारी समस्याओं का। और इस of कामना के all our कारण problems in life. Because of this उसको भूल जाते desire, हैं, we forget क्योंकि ourselves. जब आपके मन में कामना आती है Because when तो you फिर are आप influenced by अपने से desires, बाहर हो जाते हैं ना। then आप you are अपने out of स्वरूप को yourself. भूल कर You forget your जिस वस्तु swarupa, विशेष की आपको कामना है, उस कामना को आप सोचने लगते हैं, उसका चिंतन and करने then you लगते हैं start कि मुझे उस वस्तु से contemplating प्राप्त on होना the है, object which उसे you are पाना है। desiring. तो ये कामना जो है ये दूसरा काम यही So करती है this desire, कि what else आपको it अपने से does? दूर ले जाती है। It takes us away from ourselves. और दूसरा ये काम ये करती है And कि आपको its another job भविष्य में is ले जाती है, वर्तमान से। it takes us to the future. From the present, it takes us to तो future. वास्तव में समय तो Actually, वर्तमान ही है, time is लेकिन always in कामना के present कारण only, हम but due to kamana or भविष्य desire, का सोचते रहते हैं। we keep thinking about the future. तो मनुष्य का मन इसलिए फिर भविष्य में ही घूमता रहता है, That's why the human mind always roams तो around in यही वो the काम future रूप only. कामना करती है। So this is what और फिर आपको kamana ऐसा does. लगता है कि जब And मेरी ये then कामना you पूरी हो feel जाएगी तब मैं as सुखी if होऊंगा। when your desire will be जैसे satisfied, होराइजन then you will become दूर से happy. देखें तो ऐसा Like लगता a है कि horizon from far सूरज जो है distance, पृथ्वी को स्पर्श कर it रहा है, मैं appears जाऊंगा as उस पर if हाथ लगा sky लूंगा। is जैसे आप चलते जाते हैं वही touching the आगे earth. बढ़ता जाता But है, आप and then I उस can touch it if I reach वर्तमान the से end. अपनी But गति then को as you keep moving ahead, then तो that कभी आपका also हाथ नहीं keeps लगेगा। moving ahead. You will never be कामना able to ऐसे ही catch है, it. आपसे So दूर दूर desire जाती is है। like that. Desire, कामना तो अंदर बैठी है लेकिन विषय although desire is जो sitting विषय inside, but जैसे the ज्ञान और कृष्ण sense में भेद object होते हैं ना, that we are desiring, that is तो away. विषय तो आपसे बाहर रहता है, दूर, The object और is away from us, उसके प्रति आप दौड़ते रहते हैं और वो भी आगे बढ़ता and we जाता है, keep running after उसी it, पर and ध्यान that दें तो also आगे और दिखाई keeps देता है। running away. तो इस प्रकार से जो है हमारा मन बुद्धि
हमसे So in this way, वर्तमान में our जो mind, से हम our जीते हैं intelligence, it takes वो us चीज away जो from the present. नहीं है So what we उसको do not ढूंढने have, जाना in order to have यही it, in order to obtain it, that is kamna, का trying मतलब to obtain जो it, कुछ desiring to प्राप्त obtain नहीं it. है Kamana means there is something which we do not जिसको have and प्राप्त करने की इच्छा है तो we वो want to have it. इच्छा कहिए कामना कहिए और ये अनेक प्रकार में आती है ये कामना ही जो है फिर And it क्रोध बनती है appears in many यही ways. यही मोह बनती है यही अभिमान बनती है यही मद बनती It है takes the form of anger, ईर्ष्या द्वेष illusion, राग सब इसी से envy, attachment, everything जितने comes from वासनाएं this हैं kamna, desire. जितने भी हैं तो ये सब इसी से निकलते हैं They all come from this desire only. तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी है मतलब जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है यहाँ वास्तव That's में why तो he said, the jnani, ज्ञानी one शब्द का who जो wants to अर्थ है obtain jnana, वो वास्तव में सिद्ध अवस्था निष्पन्न ज्ञानी नहीं है यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर है अगर अगर उसको वास्तव में आत्म the jnani that Bhagavan refers to साक्षात्कार here होता is on the path of jnana, he is not perfected. Because if he would have been perfected, क्योंकि ज्ञानी का then मतलब he would not have this enemy of desire. नहीं हुआ है So here jnani ज्ञान means he प्राप्त is नहीं not हुआ है perfected. प्राप्त उसको नहीं हुआ है He has not got the experience लेकिन of tattva, तत्व का वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उस but मार्ग he पर है यानी wants कि साधक है to obtain the ज्ञानी मतलब साधक experience of tattva. Here jnani किसी भी refers to मार्ग the पर है sadhak, चाहे भक्ति मार्ग whether पर he है is चाहे on the ज्ञान path मार्ग of पर है bhakti or jnana or yoga or karma, क्योंकि सभी तो तत्व वस्तु प्राप्त because करना चाहते हैं all उनके want to ध्येय obtain the tattva vastu itself. ध्येय तो The वही है कि paths may be तत्व different, वस्तु का ज्ञान हो but the goal is same, to उसका obtain ज्ञान tattva प्राप्त हो vastu. उनको अनुभूति हो उसका साक्षात्कार हो So getting the और वो jnana means to साक्षात्कार getting the जब नहीं हो जाएगा experience, तब तो ये कुछ नहीं कर सकता उसके लिए realization. फिर तो So as वो of now he is not realized, because once he is realized he is beyond the three इसलिए gunas. जो कहा ज्ञानी नो नित्य वैरिणा ऐसे ज्ञानी की बात कर रहे हैं So he is talking about दूसरी this बात type यह of है कि jnani. इसको भगवान ने The शब्द other दिया point है is that नित्य वैरी Bhagavan has used the word Nityavari. वास्तव में नित्य शब्द का मतलब यहाँ नित्य नहीं है जैसा सोचते Actually, हैं the word नित्य Nitya मतलब here does not जिसका mean आदि Nitya, होगा ना अंत तो because उसका कोई Nitya आदि actually नहीं है means what that which does not have any beginning जिसका जो and अंत end. संभव है अगर अंत संभव नहीं है तो फिर ये So पूर्ण this, प्रवचन so but करने की here तो आवश्यकता ही the नहीं है it is possible, the end is there, तो नित्य it is शब्द possible. शब्द का यहाँ पर थोड़ा अर्थ So हमको if it समझना is पड़ेगा literally कि उसका Nitya, अर्थ होगा then there is नित्य no point of talking about it. So उसका here अर्थ the है Nitya Vairi जिसका means वैर actually आरंभ Anadi से Vairi. आरंभ से जिसका कभी आरंभ The नहीं है this enemy is within us since beginningless और इसका अंत time. हो सकता It है is Anadi, और वो कभी अंत but हो it can जाएगा be destroyed. जैसा भगवान आते हैं ज्ञाने न तो तद ज्ञानम ये शाम नाशम नासितम आत्मन है कि जिस ज्ञान से इसका ज्ञान विनष्ट हो गया है तो वो फिर इसको प्राप्त करता है तो इसलिए So one whose ajnana is destroyed by this jnana, he obtains it. So here the और word Nitya has to ज्ञानी be शब्द taken in का the sense of Anadi. विवेकशील And विवेकी here साधक Jnani refers to one who is ऐसा sadhak, लिया one who has तो ये discernment, कहा कि vivek. ज्ञानी का ये नित्य वैरी है तो So now अज्ञानी का इसका here नित्य वैरी नहीं he है is telling that this is the eternal enemy of the ये Jnani, जो काम है क्या ये ज्ञानी के one लिए who है has नित्य वैरी viveka. है So अज्ञानी then के the लिए नहीं question is it not the enemy of the Ajnani, one who is ignorant? अगर कोई कहेगा चीनी खाना जो है वो मधुमेह के रोगी के लिए विषवत है If somebody तो इसका says मतलब that जिनको मधुमेह eating है वो उसके sugar लिए नहीं है is not good for a जिनके लिए diabetic ये वैध patient, है so that means one who is not a उनके लिए diabetic ये patient, he नित्य has no वैरी है problem with the sugar. तो So ऐसा नहीं है similarly here when इसको Bhagavan ज्ञानी is telling that समझेंगे भी नहीं this desire is इसको वो eternal enemy of Jnani, so is it not eternal enemy of the वो ये Ajnani, समझता the है ignorant? It ये is, मेरा but he वैरी doesn't है accept that point. और The जो Jnani, the one who ज्ञानी is नहीं wise, है he जिसका understands, he नित्य वैरी accepts नहीं है that this desire is वो my इसको वैर नहीं enemy. मानता But one who is इसलिए not wise, one who is वो not इसके Jnani, भोगों के पीछे he भागता नहीं doesn't accept that point. अगर वो भी इसको समझे तो That's वो why he इसको always runs नहीं after, है he तो वो always इसको chases शत्रु the की तरह sense देखता है objects. कि कामना जो So है he sees ये these मित्रवत है लेकिन अंत में वो desires इसको as नहीं his चाहता friend, not as लेकिन enemy. वो इस बात को But at समझ the नहीं end, रहा he also gets misery, suffering तो only. वैरी होने
but he doesn't understand this point. So, what is the meaning of this vairi or enemy here? So, it basically means it is an obstacle on our path. It stops us from achieving our goal. So, as Bhakti yogis, we are desiring to realize Bhagavan, to get Bhakti. So, this desire is the enemy on our path, it is an obstacle on our path. Every person wants to achieve happiness, and whoever puts obstacle in your path of achieving happiness, he is your enemy. So, this desire also puts obstacle on our spiritual path. The next quality that Bhagavan is explaining about this enemy is dushpurena. It is insatiable. So somebody may say that okay, if you have desire, just fulfill it and it's over. Because desire is of an object. It is not something which is never ending. If you are hungry, then you eat food and your hunger is gone. If you want something, then just get it and then that desire will be gone. ये समाप्त नहीं होती है So Bhagavan is telling no, it will never be satisfied. It is insatiable. Particular desire may be satisfied, but all desires cannot be satisfied. So the problem is not of just satisfying one particular desire. Even if one particular desire is satisfied and the other desire appears, so you still have desire. The jati is same only, desire is desire only. That is why how to fulfill those desires. So he is telling here, satisfying them will not end. The satisfying desires will not put an complete end to it. It will not put a full stop to the desires. तो ये इसको उपभोग करने से ये कभी शांत होती नहीं है. So by satisfying the desires, they will not end actually. Rather, when you satisfy the desires, you get a new samskara. पतंजलि महाराज कहते हैं. और वो जो राग पैदा करेगा वो राग से उसका जो Raga will be generated because you liked fulfilling that desire. फिर कामना आएगी. So you will have the raga and then again there will be desire and again you will have to work to fulfill that desire. When there will be desire, then you will work accordingly to fulfill that desire. तो ये चक्र फिर चलता रहेगा. So this cycle will continue. That's why he says it is insatiable. Why? Because we are conscious beings. We are not matter. We are conscious. And consciousness cannot be fulfilled by matter. If you have a vessel which contains milk and it is half filled with milk, so if you have to fill it completely, then you will fill milk only. If you fill something else, again if you pour something else, then it will not remain milk anymore. If you want to fill it completely with milk, then you have to pour more milk only. Like Sri Jiva Goswami explains in Tattva Sandarbha, that he gives an example that if you have a golden ornament and some part of that breaks, so if you have to repair it, you have to repair it by gold only, not by iron. Similarly, we are conscious beings, so we can be fulfilled by consciousness only. We can be satisfied by that only, not by matter. So somebody may say devotees, they also desire. So they desire for bhakti. So is that desire also their enemy? No, that desire is not an enemy. Because that is related to our swarupa. And another point is, Bhagavan is anyway always available. दूर भी हैं, पास भी हैं. उनसे पास तो और कोई चीज है नहीं. हमारे स्वरूप से सबसे पास में Nobody is nearer to our swarup than Bhagavan himself. He is inside us.
He is not just inside the body, he is वो तो inside भाग the नहीं Atma रहा है, also. So he is anyway always available to हाँ, everyone. But due लेकिन to ignorance, वो भूले हुए हैं, due विस्मृत to हैं। Ajnana, we तो इसलिए are भी इस do कामना की not पूर्ति remember तो हो him. नहीं सकती है, और उसकी तो है ही। अगर हमारी कोई कामना We are पूरी not हो aware of सकती है him. तो वो भगत प्राप्ति की हो सकती है। So if any तो desire can be कामना करने का satisfied, मतलब ये है it is कि only the desire of attaining Bhagavan that can be satisfied. Because यही मतलब होता है ना। और अगर वो it, पूरी होकर फिर और कामना satisfying a करें तो desire कभी भी नहीं means होगी। it should not come again. Because तो if you satisfy a desire and that desire appears again, तो then how इसलिए can you say it is जितनी भी satisfied? कामनाएं हैं That is why वो कभी all पूरी the नहीं होंगी, material होंगी कभी desires, नहीं। they will never be satisfied. It is not possible. उन भौतिक कामनाओं को आप दो में विभाजित कर सकते हैं। एक You जो can हमारे divide those material desires लिए in चाहिए, हमारे two. शरीर का One व्यापार is चलता रहे, that that is one that is needed to maintain our body, और उनको इसलिए like कामना food, कहा etc. जाता है That क्योंकि has उससे to be ज्यादा that has to be taken. That cannot be counted as वही kamana. But anything कारण that है। we desire more than our तो necessity, ज्ञानी लोग it भी becomes the cause of our bondage. इसकी पूरी Otherwise, कामना करते हैं, jnanis uh, लेकिन क्योंकि वो they केवल also take शरीर food, धारण they करने के also लिए wear है, clothes, ना कि but that is दूसरे just to maintain the body, not as a sense दूसरे को enjoyment. कहते हैं, क्योंकि वो मिल जाती है तो उसके So बाद that is not called उससे kamana, ज्यादा और because इच्छा नहीं once करते। they get what they need, what तो is their इसके हिसाब से अगर necessity, हम they do देखें not तो desire more ऐसा than होता that. है, जो कामना हमारी So if पूरी हो we सकती है reflect वो properly, भगवत संधि we संबंधी will कामना ही understand पूरी हो that पाती है। the only desire that can actually be बाकी जो satisfied कामनाएं is हैं desire related भले to ही कामना Bhagavan. विशेष आपकी पूरी हो जाए, लेकिन वो कामना Otherwise, पूरी नहीं some होगी। particular material desire may get बाकी तो satisfied, परिवार but चलता ही in रहेगा, general, परिवार material के लिए desire खाना itself will चाहिए, never be satisfied. It अब has a इसलिए whole family. Some material कामनाओं desire को or the other will always keep appearing in the mind. इसलिए So when it छोड़ने का appears, प्रयास क्यों करते हैं। then for that, तो इसलिए शास्त्र में when बार बार ये you आता है anyway कि cannot satisfy it, सुख है why do you endeavor to fulfill it? दुख बगैर प्रयास के आता है, सुख That's why Shastra says, just like you get उसके बिना sukha प्रयास के नहीं without आता। endeavor, you get dukkha तो without प्रयास endeavor. करना है So what तो is the उस point of endeavoring for सुख स्वरूप material fulfilling material desire? We should endeavor to दूसरा अर्थ ये fulfill the है कि desires related to ज्ञानम Bhagavan, related to his ज्ञानेन seva. ज्ञानम एतेन, तो ज्ञान का मतलब ये हमारा स्वरूप भी हो सकता है So here Gyan कि हम can वास्तव में refer to ज्ञान our स्वरूप हैं। Swarup also, ज्ञान that स्वरूप का actually मतलब we are Gyan हम Swarup. चेतन हैं, Gyan Swarup here means that अभी we are फिलहाल हम अपने conscious, आप को जड़ समझ रहे हैं, but currently we are हम considering शरीर ourselves से as तादात्म्य कर रहे Jad, हैं, matter. अपने आप को शरीर We मान have रहे हैं। done Tadatmya तो ये भी with the body, आवृत है, and then we consider ourselves तो to be the वास्तव में body. मूल So this is also आवरण तो covering. यही है। So actually the real covering is माया this जो only. कार्य करती है, Maya does एक two आवरण things. और दूसरा विक्षेप, One is avaran, that तो is वास्तव में covering, जो and मूल other is आवरण हमारे vikshep, ऊपर है putting into illusion. माया का, वो यही है So कि हम the अपने original स्वरूप covering को of विस्मृत Maya कर चुके हैं। is this only, that we have ये तो forgotten मानते हैं कि हम our हैं, Swarup. We know लेकिन that हम we कौन हैं, exist, we are, but हमारा who we वास्तविक are, स्वरूप क्या है, what is our ये ढका Swarupa, हुआ है this knowledge, this is covered माया से। by Maya. और केवल ढका ही नहीं हुआ है, उसके And it साथ is में not just covered, एक विक्षेप भी है, then there is हम vikshep ये also. शरीर है, We think ये that we हमारी are this मूल बुद्धि body. है। So this is our real enemy. तो इसी इसी से सब कामना निकलती हैं। फिर So कामना का जो from this only all the other desires they arise. This is the यहाँ seed तो केवल of वो विवेक desire, दिखाई seed दे of रहे हैं, kamana. Although लेकिन here he is वास्तव में देखा जाए uh, going till तो the शरीर viveka ढक only, गया, but if you analyze हमारा स्वरूप carefully, जो ढक गया है वो है, our swarupa itself has got और covered, उसके कारण फिर ये सब चालू होता है। and because of that तो all ये these विवेक things हमारे अंदर happen. वास्तव में है, ढका So हुआ है actually इसलिए we ये have है this नहीं। power of discrimination within us, because if it is जैसे covered, हम it means अज्ञान it is को there. आदि अज्ञान बोलते हैं ना, Just like we address this प्रारब्ध ajnana as anadi और ajnana, अनादि कर्म, anadi karma. अनादि अज्ञान, तो ऐसे ही हमारे अंदर अनादि Similarly, विवेक भी है,
we have this anadi vivek, anadi power तो of इसका मतलब, discrimination also within us, and that is covered by this लेकिन desire. But इसका होने के कारण हमको ये पता भी नहीं है कि हमारे पास है ये, being if it is, since it is covered, क्योंकि we do not even know that आपके we साथ actually जब भी have it, कोई व्यवहार करता है because whenever somebody deals with you, तो आपको ये इतना विवेक तो रहता है कि मेरे लिए you क्या have ठीक this है, much of तो वो vivek आपके साथ or कोई discrimination, that what is right आपके for साथ me, what झूठ is नहीं wrong, करता, what झूठ is good, बोलता what नहीं is है, bad. Like if somebody cheats you, तो आपको somebody lies, then you do not like it. नहीं, आपको तो पसंद नहीं आता ना कि कोई आपको झूठ बोल You के do अगर not आपको like धोखा दे। if somebody तो इसका lies. मतलब आपको इतना विवेक है कि झूठ बोलना It अच्छा नहीं है। means that you have this much of भले discrimination, इसमें आपको vivek, ज्ञान दिया हो या that ना हो, it is lying is आप not good. जानते हैं ना, कोई अगर आपके प्रति We all know हिंसा this. करता है, If somebody is आपको violent अच्छा नहीं towards लगता, कोई you, आपको मार दे, कोई आपको एक do not थप्पड़ like मार दे it. तो आपको अच्छा नहीं If लगता, somebody slaps you or beats you do not like आपकी it. कोई चीज चुरा ले If somebody steals your तो अच्छा नहीं property, लगता। you do not like it. तो इसका मतलब So it चोरी means करना अच्छा नहीं है, stealing is not good, हिंसा करना अच्छा नहीं है, violence असत्य is not बोलना good, अच्छा नहीं है, lying धोखा is देना not अच्छा good, नहीं है। cheating is not ये good. सब जानते हैं Everybody knows this क्योंकि ये उनको अच्छा नहीं लगता है। because they do not like this. और अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी And अच्छा if नहीं I do लगेगा। not like it, then it is obvious that the इसलिए other person will also भगवत not गीता में like it. कहते हैं That's why आत्मोपम्येन in सर्वत्र sixth chapter, Bhagavan will speak. संपश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो कहते हैं आत्मोपम्येन He says सर्वत्र, that अगर हम अपनी आप से तुलना if करके दूसरों को भी देखें, if इसको we तो see others साइकोलॉजी में एम्पैथी बोलते हैं, comparing with ourselves, this is called तो ये empathy सबसे बड़ी in एम्पैथी है अपने psychology. विवेक में। So this is इसमें जो the biggest हिंसा झूठ से empathy, बोलता है तो that मैं if पसंद नहीं somebody करता हूँ, lies to me, I do not उस like व्यक्ति it. को पसंद नहीं करता हूँ। I do not like a जो person झूठ बोलता है who या cheats, जो who मेरे प्रति कोई lies, हिंसा करता है or तो if मुझे अच्छा somebody नहीं is लगता। violent towards me, I do अगर not मेरे like को it. अच्छा नहीं लगता है So तो when I अगर do मैं not किसी के like साथ it, में झूठ बोलूंगा या and किसी if के साथ में I हिंसा करूंगा या किसी की lie वस्तु to someone चुराऊंगा else, if I तो steal इसका somebody मतलब else's दूसरे को अच्छा नहीं property, लगेगा, मैं he अपनी will तुलना also समझ not like सकता हूँ, it. क्यों नहीं समझ सकता। So I can understand it by reflecting on तो myself ये only. विवेक तो हमें प्राप्त है So this Vivek is already there बिना with किसी us उपदेश के दिए हुए, without छोटा any बच्चा भी जानता instruction. है इस बात को। Even a small child understands कि this उसके much. पास में कोई खिलौना है, कोई खाने की चीज, आप उससे If ले he लो has a toy and if you take it away from him, he या becomes उसको कोई upset or थप्पड़ मार no? दे तो वो If somebody slaps रोता है या नहीं। the child cries or no? या उसको आप कहें कि मैं आपको थोड़ी देर में If चॉकलेट you दूंगा tell the child that I will और give वो you a आपको chocolate, चॉकलेट देकर you आपसे do दूर this, भाग जाए, and then you do not give the chocolate, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? then does he तो like उसको तो that? आपने अभी कोई ऐसा उपदेश दिया नहीं है ना कि सत्य बोलना चाहिए, So you have हिंसा not नहीं करनी चाहिए। instructed him, you have not taught him that we should not lie, पर we should ये not ज्ञान, ये विवेक तो steal. पशुओं में भी है। But even the animals have this vivek. आजकल कुत्ता रखते हैं, कुत्ते को आप खाना खिलाते Nowadays हैं, उससे प्रेम people करते हैं keep तो कितना खुश होता है वो। keep pet dogs. If you उसको feed the खिलाते pet हैं तो dog, अच्छा he लगेगा ना। likes it so much. कई If you ऐसे beat लोग the हैं dog, जो will अपने it like परिवार it? में कुत्ता के पूंछ हिलाता है, So when उसके you पीछे पीछे if you घूमता keep है, food in front of तो the उससे क्या dog कहीं वो runs पूंछ after the हिलाएगा? food. So has the dog heard any lecture? नहीं। No. तो ये विवेक जो है So ये this है viveka is there. हमारे सबके पास। We all have this power of लेकिन discrimination, इस विवेक को जो है हम but केवल शरीर संबंधी ही रखते हैं, we use this vivek only in relation to our body. और दूसरा This is the first इसका point. उपयोग And secondly, केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। we use it only to fulfill our अगर selfish इसी desires. विवेक को हम दूसरों के लिए भी If उपयोग we करें, use this vivek, आप this धर्मात्मा power कहेंगे, of discernment, आपको कोई धर्मात्मा discrimination कहेंगे, महात्मा in कहेंगे, respect to others ऐसे also, लोगों को इतना then विवेक we है will become dharmatma, जो we will दूसरों become के a लिए saint. अपने परिवार से ऊपर उठकर भी सोचते हैं कि भाई दूसरों के साथ अगर Saint मैं is the गलत करूं, person who rises अगर मैं दूसरों above को धोखा दे fulfilling दूं, his own अगर मैं desires दूसरों को and धोखा thinks दे about दूंगा, others also. तो ये तो आप That अपने लिए if कर I रहे हैं। cheat तो लोग others सोचेंगे कि for अच्छा feeding ये my ये family, तो is आप it correct? It आपको is लगता not है right. कि ये बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, And if you understand this and if you actually live by this इसको principle, सनातनी you then you will be saint. People will call you a है, saint. सत्यवादी है,
that you are truthful, you do not cheat others. इस विवेक को अगर हम उपयोग करने लगें So if तो we हमारे start using this vivek, this discrimination, then in our life तब्दीली आएगी there will be और a फिर major हमारा change, ये जो आवरण है ये घटने लगेगा and then this covering will start क्योंकि जब हम reducing. इस धर्म के विरुद्ध में काम करते हैं इसी को Because धर्म when we act, this is और called इसमें dharma. इतने In Dharma Shastra, जो कहानी और इतने in Dharma Shastra, so many स्टोरी stories and समाप्त instructions are करने there. के लिए They ही are meant to इसी explain के लिए बड़े बड़े this point itself. पुस्तकें लिखी गई हैं चाहे In वो order to explain this, so many शास्त्र की हैं books, चाहे so हमारे many इतिहास के पुराण हैं stories have been इन्हीं written. चीजों को समझाने के लिए Whether it is our Puranas, the Itihasas, समझाने के लिए they are all meant to explain dharma तो इसका only. मूल हमारे पास सबके पास में है ये मूल सिद्धांत जो है और ये सब पर And we लागू all होता है have that vivek, ये and ऐसा it is नहीं है कि applicable to हिंदुओं के everyone. लिए और मुसलमानों के It's लिए not that it is ये सबके लिए just for Hindus, not for Muslims or सबके anybody लिए else. No, this is for everyone. मात्र के लिए है This is for every human being. तो इसका अगर हम अपने जीवन में इस विवेक को अगर हम उपयोग करने लगें So in our life, इसको if समझ we करके start using तो this क्या होगा कि vivek, धीरे धीरे हमारी बुद्धि then what will happen is इस slowly आवरण से our बाहर buddhi निकलने लगेगी will जिसको भगवान ने कहा यहाँ पर कि start आवृत्ति getting ज्ञान disentangled तिमिरेण from this covering, और फिर हमको थोड़ा प्रकाश और दिखने लगेगा जो पिछले and श्लोक में कहा ना उन्होंने कि will वे start seeing more light. आपका You जो will start becoming more enlightened. दर्पण की तरह जो आपका चित्त है वो ढक गया है धूल से तो As he धूल said थोड़ी हटने earlier, लगेगी that the dirt has covered the mirror, so the dirt will slowly आपको start अनुभूति going होने लगेगी away, कि हाँ and वास्तव में you will start realizing मैं your अपना स्वरूप हूँ swarupa. और फिर You will धीरे start धीरे understanding that yes, I am a conscious रहस्य समझ being, में आने not लगेगा matter. And then you will start तो understanding इसलिए इसको spirituality properly. समझना है So that's why और we have यही to जो जानना understand है कि this. वास्तव में सुख की प्राप्ति जो है And वो we इस have to realize that कामना की पूर्ति से नहीं होती है we cannot become वो happy होती है by वस्तुओं fulfilling में और उसके लिए उन्होंने the एक material desires. दूसरा भी शब्द As एक और Bhagavan भी said, शब्द it is बताया dushpura, अनलेन है and he uses one more तो adjective, अनल जो है that is analena. एक तो अनल शब्द का जो मुख्य प्रयोग किया जाता है वो So अग्नि one के लिए anal is primarily used दावानल for fire, like we say davanal, फॉरेस्ट फायर तो forest अनल fire. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि So अगर अग्नि में आप anal here आग डालते means हैं that if तो you वो अग्नि तो उससे if you फूंक pour फूंक fuel निकलेगी into the fire, वो बढ़ती then the जाएगी fire will not be doused. और Rather, अनल का it मतलब will अलम इति increase. अनल अलम का And मतलब अलग anala also बस means हिंदी में that इसको बोलते हैं enough. कि हाँ, बस इतना ही That is enough. तो जिसका कभी अंत ना हो उसको अनल So बोलते हैं anala जिसमें means that अनादि which will अनलम never end. अनलेन कि इसका इतना नहीं होगा कि हाँ It बस has मेरे no को इतना end. सारा पैसा मिल गया इतना ही बहुत है इससे So it ज्यादा is मेरे को not कोई that okay, आवश्यकता I नहीं have earned this much and that is enough. I सब don't किसी के साथ need नहीं any होता more. No, this doesn't जिसको happen with खुशी everyone. मिलती है वो बात अलग है लेकिन जो व्यक्ति If को लगता somebody है is कि नहीं satisfied, that is पैसे a की different वजह matter. से But अब मेरे those को who are जितना engaged मिल in गया है earning money, तो they वो never फिर feel that I have had करते enough. ही I do रहेंगे not need फिर anymore. यहाँ इन्वेस्ट They कर keep दो on वहाँ working इन्वेस्ट and कर दो working, invest here, invest there, तो अनल की तरह buy ही है this, उसको मतलब that. उसमें कभी So अलम it अलम continues बुद्धि का मतलब endlessly. कि हाँ अब और कुछ नहीं है Means they do not have the तो buddhi. उसका Means कारण यही है they कि nothing is enough for them. सुख जो है वो विषय वस्तु से So है why is it like this? Because we लेकिन think that वास्तव में our वो उससे happiness, we आधा get नहीं है happiness from material objects, but तो actually जब आपको किसी material से objects कामना do not होती make us happy. Because when you have तो desire for आपका मन something, then your mind पकड़ लेता है is immersed क्योंकि in वो that. वस्तु आपके मन को पकड़ लेती है It means that और फिर आप object, उसी it के लिए holds काम on करते to your रहते हैं mind, उसी के लिए and then प्रयास you करते रहते हैं continue और contemplating जब on वो that. आपको वस्तु You मिल जाती continue है working hard for that. आपकी कामना पूर्ति हो गई And तो when फिर you have आप when you have got that जैसे object, when you achieve that सुखी हो जाते object, हैं ना जब किसी की इच्छा then पूर्ति हो you जाती है feel कामना पूर्ति हो happy. जाती है मानो आपको एक बढ़िया कार चाहिए Suppose you want a तो good आप उसके car, लिए मेहनत करेंगे and then you प्रयास are करेंगे working कुछ hard सालों for तक that. उस कार के बारे में सोचते रहेंगे कि कब मेरे को मिले फिर जब वो मिल You keep जाएगी तो thinking आपको when I will get that car. तो जब वो कार So मिली तो खुशी
खुशी जो है वो कार से नहीं आई, लेकिन So कार when ने you आपको when you get कार that car, your happiness is not from that car. Basically, that car was holding on to your mind, क्योंकि जैसे and कभी आपका मन it has किसी released your वस्तु mind. से That's why you जुड़ा feel हुआ है, happy. रात भर सो नहीं So पाते, उसके when बाद your भी mind becomes disturbed by something और or जब आपका someone, मन you keep स्थिर thinking रहता about है that object or that person only. So आपके unless मन में that जो is that releases your mind, विचलित you do not होता get है, sleep. It continues disturbing तो you. ऐसे ही कामना के जो विषय हैं वो आपके मन को विचलित Similarly, करते रहते हैं। जब the आपकी sense इच्छा पूरी हो objects, जाती है तो they मन keep कहता है कि disturbing मैं you. इसलिए सुखी हूँ, When your desire is इसलिए satisfied, नहीं it खुश leaves हूँ, your तो mind, फिर and आपको then you लगता है feel कि सुखी happy. रहना चाहिए, लेकिन Otherwise, that same बहुत car दिन बाद फिर should be उसी giving चीज you को करने happiness लगते whole हैं, life. तब ये तो But उसका after few खत्म days, हो जाता है ना। you do not feel like तो that सुख anymore. जो है वो वास्तव में उसके त्याग से हुआ है। So you have गीता में actually भगवान got एक श्लोक sukha, बोलते हैं, त्यागे happiness शांति by अनंतरम, giving it अपने up त्याग से from your शांति है। mind. So Bhagavan says that peace is त्याग से achieved through शांति, tyag, renunciation, not ये by bhog, not by भगवद गीता enjoyment. में 12वें अध्याय में So बोलते this हैं, is a very deep point that Bhagavan makes. त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से शांति। तो हम उल्टा सोचते हैं, So we हम think सोचते in हैं the कि जब opposite वस्तु way. हमको मिल जाएगी तब We हम think that when we get it, we will become peaceful. तो यही बुद्धि का ढकना है। So this is the covering of आत्मज्ञानी buddhi. ज्ञानी नो नित्य वैरिण, यही नित्य वैरी है कि This is कैसे हम the eternal जो enemy, अविद्या how it और जो covers our वासना buddhi, और दुख का कारण है उसको हम सुख का and कारण समझते that which is the cause of misery, we consider हैं। it जब to be the cause of हमारी बुद्धि को happiness. भी But इस actually, प्रकार से if विश्लेषण our करेंगे buddhi is in तो the वास्तव में हमको proper पता frame, चलेगा। and if we analyze properly, then actually we will understand. हमारी बुद्धि इतनी भी ढकी हुई हो सकती है कि ये बात हमारी समझ में ही नहीं आएगी जो And हम maybe कहते हैं। our buddhi may be covered to such an extent that we do not even understand this क्या point. इसमें सहमत Like हैं? some people say तो that आप I am not able to understand this, I do not agree to all हाँ, this. बात तो वास्तव में यही है। But when और जब ये आपकी समझ में you आ जाएगा slowly come तो out फिर of अपने it, को आप then काम you करने start लगेंगे। understanding it. And once you तो understand this point, then you work accordingly. जो विषय हुए हैं जिसमें हमारा मन अटका हुआ है So, और the जिसके कारण आपको objects सुख which नहीं are मिलेगा, तो holding जब on उसको to our विचलित कर mind, देंगे तब मिलेगा। actually we will ये become बात happy when दूसरे it विषय के releases लिए our आपको mind. ठीक से समझ आ भी सकती है, Now, लेकिन जब ये in पैसे की for बात other आती है sense objects, we still understand this, but when it comes to तो money, वहाँ ये बहुत कठिन होता है कि धन को छोड़ के कैसे सुख मिल सकता है। then we do not understand that how we can be हर आदमी happy यही by सोचता है कि giving धन up मिलेगा तो wealth. अच्छा है, धन Every को छोड़ person के। thinks that by getting wealth we will be happy. और उसका कारण ये है कि धन जो है उससे हम दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करते The हैं। reason is that we acquire other तो objects ऐसा through लगता है wealth. कि नहीं So it इसके कारण तो seems हमको सुख मिलेगा, that लेकिन it will give us happiness. एक बहुत अच्छा वाक्य है गोस्वामी तुलसीदास का, So Goswami Tulsidas ji has पराधीन makes a wonderful सपने हो सुख statement नाही, कि जो व्यक्ति पराधीन है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। that one who is सुख तभी मिलेगा जब हम स्वाधीन होंगे, इसलिए dependent हर on कोई other, स्वाधीन स्वतंत्र होना he चाहता है। cannot be happy. That's why every person पराधीन wants to होने be को चाहता है, independent. Nobody wants to be लेकिन dependent. जब आप कामना करते हैं किसी Nobody वस्तु wants to की be a slave. तो आप उस वस्तु के पराधीन हो जाते But when हैं, उस you वस्तु के अधीन हो start जाते हैं। desiring any तो object, इसी सिद्धांत you को आप become लगाएंगे, जब आप enslaved by धन के that in your mind. आकांक्षा करते हैं तो आप धन के So अधीन हैं, when you are और जब धन desiring के wealth, अधीन हैं then you तो become dependent on wealth, उससे आप सुख की and प्राप्ति नहीं then कर सकते। you cannot be happy. तो इसको समझना थोड़ा कठिन है, So understanding this is सीखने little की बहुत difficult, आवश्यकता होती है, that और समझ how पाना we can become slaves of बहुत wealth, कठिन है। always dependent on wealth, तो and getting मूल out of it सिद्धांत is क्या very है? difficult. मूल सिद्धांत ये So है the what is the main point? कि The main point is हम सुख चाहते हैं, that we want happiness, और अगर हम सुख चाहते हैं and तो if we सुख want के विरोधी happiness, है, then और दुख का जो कारण है whatever is against उसको भी our छोड़ना चाहिए। happiness, whatever is the इसका cause of मतलब है our हम सुख को suffering, भी we चाहते have हैं to give it up. और दुख No, it का is जो not कारण है that उसको
We want sukha, we want happiness also, तो कैसे सुख मिलेगा? but we do not want to give up the वही cause of our यहाँ पे suffering also. इस श्लोक में जो So that is श्रीकृष्ण what बता रहे हैं, भगवान this बता verse रहे is हैं कि ये teaching, आपका वैरी है। that it is your enemy. तो ये कामना जो है ये दुख का कारण है, So this kamana, ये desire, हमारा is शत्रु है। the cause of तो इसको जब suffering. तक आप पकड़े रहेंगे और आप सोचेंगे So मैं as सुखी long as रहूंगा, you keep holding on to that and thinking मूल that I बात will be happy, that is not ये possible. बहुत गहरी That बात is the main भगवान point. यहाँ बता रहे हैं। And this is a very उत्तम ज्ञान deep point वैराग्य that Bhagavan is ज्ञानी नो making here. अप्य वैरिण, और ज्ञानी नो मतलब अज्ञानी नो अपि। ये ज्ञानी का वैरी है So तो when अज्ञानी he का says मतलब that भी it is अज्ञानी the है, ऐसा समझना। enemy of a और ज्ञानी jnani, का वैरी then है you can say it तो is the अज्ञानी को greatest enemy जबरदस्ती of the ajnani, of वो the उसके ignorant पक्ष में चल person, रहा है, because he is अज्ञानी not के even पक्ष में ये चल understanding. रहा है कि ये मेरा वैरी The है, jnani at least understands तो that it is इसको my enemy, so he can अज्ञानी do को तो ये भी नहीं पता कि something to मेरा protect मैं इसको himself. मित्र मान But रहा the हूँ, ajnani does, वो the नहीं ignorant जानता person कि doesn't मैं even इसको know. बनाता क्यों हूँ, He is considering इसको this इतना desire to be his समझ नहीं friend, है। and he is feeding the desires continuously and thinking that I will be happy by this. But this is तो not ये है possible. इस श्लोक का So, मर्म, this is the इसलिए purport मूल रूपेण of विषय से this व्युत्पन्न verse. आने लेना चाहिए। तो उस वैरी से पीछा छोड़ने के लिए So, getting disentangled, to get released from that enemy, if we कैसे have पीछा an छुड़ाएंगे जब enemy, शत्रु का then नष्ट how do करना we पड़ेगा? तो get, नष्ट करने के लिए then what we have to do is we have to destroy the enemy. आपको पहले जानना पड़ेगा कि So वो in कहाँ order है। to destroय that, first of all you have to understand शत्रु where का is it कहाँ एड्रेस, located, अगर आपको यही पता नहीं है what कि is its शत्रु कहाँ पर है तो address. उसको कैसे If you don't डिस्ट्रॉय even करेंगे? understand where is the enemy, how will you destroy एक it? बार पता चल जाए तो फिर आप मिसाइल छोड़ सकते हैं ना, Once you understand, you can release your missile. मिसाइल जाती है जीपीएस तो वहीं जाके अटैक करती है सीधा। By GPS technology, तो missile सबसे पहले attacks उसको the पता target लगाना very है कि precisely. हमारा शत्रु So जो है first of all, we have to understand किस जगह बैठा the हुआ है, exact location कहाँ where बैठा हुआ है। the enemy is seated, उसके लिए भगवान where the enemy is अगला श्लोक hiding. बोलते हैं, So for that, Bhagavan बहुत speaks the next वैज्ञानिक verse. तरीके से भगवान हमको समझा रहे हैं। Bhagavan is explaining to us in a very तो कहते हैं कि systematic इंद्रियाणि मनोबुद्धि manner. यस्य अधिष्ठानम् इष्यते उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो उसके तीन ठिकाने So, बताए इन्होंने, so Bhagavan tells that there are three काम locations of क्रोध this वासना enemy. भाग The चार, senses, the mind, and the जिनके माध्यम intellect से are विवेक और said to be अज्ञान the को abode of अंधकार desire or में calm. भ्रमित कर देता है। Covering discernment through these तो ये faculties, तीन desire इंद्रियां, deludes इंद्रिय the मन embodied और बुद्धि, self. So इसका Bhagavan is नियंत्रण telling three करती है locations: senses, mind, and ईश्वर intellect. You और can add two more to this. One is the sense object, and the other is our ahankara, so that we ये पांचों understand लोकेशंस properly. इसके So ठिकाने हैं, actually, these are इनमें its वो बैठा five हुआ है। locations where किसमें is में it is बैठा हुआ है? seated. क्योंकि पहले भगवान ने स्वामी कहा ना So इसके it ठिकाने, is it इंद्रियेषु is located in the sense राग objects. द्वेष व्यवस्थित। Bhagavan told earlier, क्योंकि पहले कह चुके हैं तो अब दोबारा नहीं कह रहे हैं उसको। because he told that earlier, that's why he is not स्वामी adding समझ that गए point होंगे, in this list. समझदार लोग हैं, याद रखेंगे। He तो विषय के assumes बारे में तो that पहले ही कह चुके हैं those who are hearing Gita, they are intelligent, कि they ये will हर understand. एक इंद्रिय का अपने So विषय में regarding भाग है, sense objects, he has वो told earlier रग की बात that for every sense object we have the rag and है। kama, राग same thing द्वेष only. काम में ते इति काम है। तो वो काम जो है वो विषय में है, इंद्रिय में भी है। So the kama is in the vishaya, the sense object, इसको चस्का लग in जाता the है indriya, कि in the लोगों को sense, खाने का, सुनने का, देखने का, like we become addicted लोगों को to देखने का चस्का hearing, लग जाता है आजकल। seeing, ये एक बहुत बड़ी समस्या है eating. कि Nowadays, this is a वीडियो big देखते problem. रहते हैं, People keep watching घंटों घंटों रहते हैं videos उसी में, रात को and 2-3 बजे तक लोग and सोते नहीं keep हैं। spending hours and hours in that. They आंखें बेचारी don't even sleep लगी हुई till हैं, even 3 o'clock in the पूरा night. शरीर थका हुआ So है, the eyes are continuously मन engaged. कहता है और देख लो और Body देख is लो। tired, but the mind says watch समझदार more लोग and हैं, more. And then इंद्रियों mind. का तो खैर अब कहना ही क्या है, सब जानते हैं। So what can be said इंद्रियों का about the केंद्र जो mind? है, Mind is इंद्रियों the जब center प्रकट होती है ना, where इंद्रियों में
desire appears, even if it is in the sense object, it will appear in the mind only. और फिर बुद्धि If it is in the sense, it will appear in the mind only. बढ़ जाती है, And then टेंडेंसी रहती है कि the हम buddhi also becomes greedy तो इनको and भगवान कहते हैं starts कि ये telling that yes, it is good for you to fulfill this इससे desire. मतलब बैठे So रहना, Bhagavan says these are इसके the ठिकाने हैं, locations where इसके the enemy is seated and where the enemy is hiding. इससे लड़ना चाहते हैं, So if you want to fight इससे आप against this मुक्ति enemy, चाहते हैं तो इन if you want को freedom संभालिए, from this enemy, then इनको you अपने should नियंत्रण में लीजिए। you should take care of your और senses, बुद्धि mind, द्वारा वो intellect. क्या करती है, एतैर And विमोहयति, what the enemy इनके does द्वारा जो है in वो these locations मोहित is करके through these faculties मैं it शरीर मन deludes आत्मा ये us. हमारे ज्ञान को ढक दिया। So we are ये Atma and we consider बुद्धि ourselves से क्या Sharir, करती है, ज्ञान को and ढक देती है। our jnana gets covered. कैसे मोह पैदा होता है कि हमारा जो मूल ज्ञान है कि So मैं how the चेतन हूँ, illusion appears? Our मैं शरीर से भिन्न हूँ, original इसको state is of being an Atma, और फिर मोह not पैदा being होता the है। body, but this मोह gets में क्या covered होता है, and जीव वैचित्य we become deluded ये and we start thinking we are the जीव body. समझ लेना, This is या what जो moha जीव समझ means. लेना, यही तो मोह है ना, यही तो Considering something to be something else, considering a ये rope भ्रम to पैदा be a कर देता snake. है हमारे अंदर कि मैं शरीर So हूँ, we become और deluded उस भ्रम and में ही start जीते thinking रहते that हैं we are the body. पूरा And then जीवन we इसी भ्रम lead में our रहते whole हैं। life in this illusion. और फिर जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए जन्म हमको मिला है, जिसके लिए शरीर मिला है, वो हम भूल जाते हैं, उसके लिए कोई प्रयास ही And नहीं we करते हैं। forget the main purpose of our life and we stop working hard to achieve the goal of our life. That's why this is our इसमें enemy. इन पांच में भी So in these जो मूल अधिष्ठान five है also, the main वो location वास्तव में है अहंकार, is the ahankar, क्योंकि वहां से चालू होती है because everything begins चित from there की only. जड़ ग्रंथि। What we call the चित, चित माने चित, knot of chit and jada, और जड़, consciousness and matter. जड़ माने ये मन बुद्धि Chit चित्त is अहंकार, ये तो chetana, ये consciousness, आपस and में jada is matter, and they संयोग, get संयोग tied क्या आपस में together. इनका एक A सन्निकर्ष knot होता is है, made. इसको मैं संयोग तो कह नहीं सकते, Actually, you ये cannot दोनों call it a आपस में sanyog or contact, घुल मिल हो जाता है, आपस में एक दूसरे की मित्रता हो but जाती some है। kind of a knot जो चित happens. है वो अपने आप They को become कॉन्शियस समझता है, friendly. जड़ जो है वो चित समझता है, दोनों The matter फर्क नहीं पड़ता considers है। itself as consciousness, consciousness और इसके considers द्वारा itself as matter, then there is no difference between both, तो अभी and then we call it हम ahankar. चेतन है ये हम जानते हैं, So we know that we are conscious वो भी हम beings, हैं ये इतना तो जानते we हैं, बाकी know सब that we जानते हैं। exist, we are. कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि मैं Some चेतन people don't शरीर से even भिन्न हूँ या know मैं चेतन हूँ, that we are conscious beings, we are different वो from लोग this ऐसे body. समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, Mostly people ये think बॉडी like है, this ये only, जानते नहीं, that we are this body, इसके लिए but at उनको least जन्म they मिला। understand that yes, we are. तो ये जो गांठ है, जो ग्रंथि है, So जो इन this दोनों knot, का सन्निकर्ष है, यही मूल है, this is the जिसको भगवान main दूसरी बात बोलते हैं place. आगे, ईश्वर अहम हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी अहम हम, जो ज्यादा इससे बंधा हुआ है वो ज्यादा अहम हम बोलता है, The more one is, अहम हम one बोलता है। has this knot तो ये or अहंकार ahankara, फिर he always speaks in terms of ग्रंथि I. में आता है। तो चित है, एक चित है और एक चित्त है, बस खाली एक तकार So ज्यादा लग गया one है is चित्त chit, में। that is चित्त में chetana, अगर एक and पात other हो is जाता है, चित्त chitta. हो जाता By है, adding one more तो takar, चित्त का that is मतलब फ्लैट chitta, भी होता है, and chitta means flat also. तो आप फ्लैट हो गए फिर। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं So then you fall flat वो due to हमारी this maya. शरीर मन बुद्धि इंद्रिय इन्हीं से होती है। So all the actions that we इसलिए perform, it is done by अगर this हमें body, अपने senses, आप को इस mind बंधन only. से छुड़ाना So है, if we have to release ourselves from this enemy of इसलिए karma, इन क्रियाओं को हमें ठीक करना पड़ेगा। then we will इसलिए have 5वें to अध्याय में भगवान कहते हैं कायेन do the मनसा actions properly. इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है, कि आत्मा की शुद्धि के लिए जो है योगी लोग इनसे क्रिया करते हैं, So Bhagavan says that ऐसे the ऐसे yogis, इस they इंद्रियों से
they perform action with this body, mind, senses for self purification, being devoid of attachment. तो वहाँ चार चीजों को लिया है उन्होंने So भगवान ने, there he has taken four things. मन, One is the body, the mind, बुद्धि और इंद्रिय। buddhi, and the indriya, the senses. उसमें सबके पीछे फिर वो अपना अहंकार रहता ही है। And then the ahankar is behind all of this. हमारा इंस्ट्रूमेंट है So this is our और instrument, the इसको apparatus, शत्रु ने कब्जा किया हुआ है। and the enemy has captured तो this. जैसे कहा कि इंद्रियाणि हयान्याहु, So as it was said earlier, that हमारी घोड़े हैं, the senses are like the horses, and the body is like the chariot. घोड़ों की Mind is the सारथी, rope और बुद्धि जो है or the reins वो to control the horses, चलाने and वाला। buddhi is the driver. तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप रथ So पे you बैठे can हैं, consider it like लेकिन you are seated रथ on the वाला आपका chariot, शत्रु है, but the driver who is और driving रथ the के जो chariot आगे is your सीट है enemy. Or let's say you are seated in a उसके सीट car, पर, और जो you कार are को seated in the चलाने back वाला seat, है, जो and कार the को चलाने driver वाला है of वो the आपका car शत्रु है। is your enemy. तो क्या आपका जीवन सुरक्षित है? So is your life नहीं है। safe? You are not safe. कि आप हवाई जहाज में जा रहे हैं और जो You पायलट है are in the aeroplane, वो आपका and let's शत्रु है, say the pilot वो is your सुरक्षित नहीं है। enemy. तो ऐसी Suppose, स्थिति then आती your है life is not safe. क्योंकि So this भगवान ने is कहा है our ना कि आपका situation इंद्रिय मन बुद्धि currently, because Bhagavan is telling that your senses, mind, intelligence. इंद्रियों को घोड़े समझो, और मन प्रग्रह में वच, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। So Bhagavan says that buddhi is the sarathi, the driver, तो ये and बुद्धि atma जो is है the passenger. पैसेंजर, वो ये आत्मा है। So the atma is the अगर शत्रु passenger. ने इन सब पर नियंत्रण कर लिया है, So if कब्जा the कर लिया है, enemy तो हम has तो एकदम खतरे में हैं। got hold, has तो मुझे captured उसको on all of this, शत्रु के then चंगुल our में नहीं life पड़ना। is under threat. So we have to release और वो ourselves तभी from this संभव है enemy, जब इसके लिए हम अपना विवेक, अपनी and बुद्धि, that is only possible हमारा जो सबसे बड़ा by using vivek, our buddhi, हथियार है, our हमारी greatest सबसे बड़ा instrument, शस्त्र है, जो हमारी weapon. आत्मा है, The, वो the greatest विवेक weapon है। that we have is our buddhi. और बाकी तो गुरु कृपा, साधु कृपा, The भगवान की rest कृपा, is mercy of Guru, Vaishnavas, उनके ऊपर है। Bhagavan. That is up to वो जो them. कर सकते हैं वो हमारे But ऊपर whatever है। we can do, what we can do is तो use शत्रुओं our से हम कैसे buddhi छूटें? to release ourselves from this enemy. इसमें जाना नहीं है, हमें अपने आप ही उसका उपयोग करना है। तो फिर हम इस शत्रु के नियंत्रण से हम मुक्त हो सकते हैं, So then we और can तभी release हम वास्तविक सुख ourselves को प्राप्त from the करेंगे। clutches of the enemy and जब तक actually हमने अपना achieve सारा जीवन happiness, achieve ananda. अपने शत्रु के हाथ As में long नहीं दिया, as we have given the control of our life to our enemy, बड़ी till then हास्यास्पद बात it is है, ये संभव ही नहीं है, ये होगा not ही नहीं, possible to become happy. इसमें कोई It will never happen. संशय नहीं है There is कि no ये नहीं doubt होगा। in this. तो इसलिए भगवान कहते हैं That's इंद्रियाणि why Bhagavan says, स्वाधिष्ठानम् उच्यते, एतैर् विमोह्यत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं, किसी so को we कोई will stop पूछना है here. तो पूछ If सकते you हैं। have any question, you can ask. बाबा जी, यूट्यूब से प्रश्न है कि किस प्रकार से Question: कुछ लोग जो भक्ति साधना नहीं कर रहे हैं those who are वो हो not सकते doing हैं, वे sadhana of bhakti, सहनशीलता और विनम्रता those से who are नहीं रहते atheists, हैं? who are ऐसा expert अनुभव है, in showing humility, etc. देखा कि वो ज्यादा सहनशील है, How do you say they are कहता ऐसा more हुआ नहीं है। tolerant? I have no such experience किसी का स्वभाव हो that those सकता who है, are not in sadhana of bhakti, they are या more ये है tolerant. कि अगर It आप may be in their swabhava. के That मन is में another कामना point. है Another point is और if you have some आप desire, उसमें some भक्ति kamana, करना चाहते हैं,
and you want to fulfill that desire, and you know that just by yourself, just by your endeavor, you will not be able to fulfill your desire. You need help of the other person. Like suppose you are working in an office, you know that I will get wealth from here, and then through that wealth I can fulfill my desires. And let's say your boss, your employer, if you do not please him, still you tolerate him. So why do you tolerate him? Just for fulfilling your desires. It is not in your swabhava to tolerate, and you may go home and then you may criticize that person, but in that particular place in the office you are tolerating, so that is out of compulsion. संदीप जी का प्रश्न है Next बुद्धि और question, विवेक में क्या what is the अंतर है? difference between buddhi and vivek? Vivek is a quality of buddhi. Discernment, power of discrimination is a quality of आकाश जी buddhi. का प्रश्न है Next question, आपने बताया you कि said that we हमें should give up the sources of our इच्छा के कारण dukkha, the sources काम of करना our चाहिए। desires. दूसरी ओर आप ये भी On समझाते the हैं other कि hand, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए you are हमें teaching योजना us बनानी to make a चाहिए। plan to reach लेकिन our आप उसी aims में in कह रहे life. हैं कि So, जब isn't it हमारे true लक्ष्य का स्रोत that है there are तो क्या desires, हमें the sources of लक्ष्य our को नष्ट कर aims? देना So, चाहिए? we should destroy our aims? Answer, what I have said is that goal is of two types. One is material, one is spiritual. So, even if you achieve the material goal and then you endeavor for that, but ultimately it will not give you happiness. So you can continue doing that, but its end result will be misery only. So this is what Arjun was telling, राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, मेरे को अगर स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी मैं सुखी नहीं होऊंगा। that even if I achieve the kingdom of Swarga, I will not be happy. So this is everyone's कहने का मतलब ये है situation. कि भौतिक कामनाओं की पूर्ति में आप लगे रहिए, उनको आप So अपना point लक्ष्य is, बनाइए और उसके लिए you अपने make material प्रोत्साहन goals, रखिए, you लेकिन उसका keep परिणाम fulfilling them, you become tolerant in fulfilling them, but its end result will not सुख be तभी होगा जब sukha. उस कामना की पूर्ति हो जाएगी, नहीं कामना को छोड़ दिया आपने। And even if you get the happiness, it is because that particular वास्तविक object सुख जो left है your वो mind. आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति से ही होगा। Actual sukh is only by fulfilling the spiritual goals. आपका मूल So प्रयोजन, मूल लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक your होना main चाहिए, goal should be और उसके spiritual अनुसार only. जैसे मैंने कहा कि हमारी आवश्यकताएं हैं, And then भोजन की, रहने की, परिवार की, within that, वो पूरी whatever करनी पड़ेगी, material उसके बिना necessities you may होगा have, नहीं। food, clothing, shelter, लक्ष्य की whatever, पूर्ति के लिए you fulfill that. But संसार में that is जन्म also लेना है, not उसके लिए your भौतिक वस्तुओं की primary आवश्यकता goal. पड़ेगी, We live in the material world, so we उसके need material उसके objects to लिए sustain ourselves. But that is not the goal of our उसके लिए life. वो उपकरण हैं, हमारी Those are आवश्यकताओं simply को पूरा करने के instruments लिए, in भौतिक our लक्ष्य को attainment प्राप्त of करने के लिए। spiritual goal. फिर वो भौतिक लक्ष्य जो है उनके उपकरण बन जाते हैं। So then when the spiritual goal is the primary goal, these material objects they simply become instruments. संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Dandavat Pranam Babaji Maharaj. Am I audible? Haribol? 80%। हाँ बोलिए, थोड़ा हिलती हुई वाणी है आपकी। अच्छा, बाबा जी महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे So the विवेक question is बुद्धि का, like Vivek हम or अपने विवेक discrimination से is a quality of buddhi. और आपने जैसे So क्लास में समझाया कि अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे हमें अपने using स्वरूप our का अनुभव Viveka, हो जाएगा। if we start using our Viveka, लेकिन then slowly सेंस में we ऐसा will देखा गया start है कि understanding our हम जैसे Swarupa. 5 बार But it विवेक का is seen इस्तेमाल in करते the हैं, practical लेकिन 10 बार life कामना के that फ्लो में आ जाते हैं। even if we आप use our इसको Vivek a few कैसे करते हैं, times, या ऐसे but then प्रैक्टिस करते हैं? more often we come under the sway of our desires or kamna. किस So what प्रकार should be उसके done? लिए वहां भी प्रयोग कीजिए उसका। So answer, you should continue practicing even when you are coming under the sway of your desires, फेल हो रहा है and तो by your उसका buddhi, if you are already understanding that you are failing, उसमें ज्यादा लगाइए कि then यहाँ you मेरे should प्रयोग use नहीं हो your सकते। mind and your buddhi more into succeeding in those situations also, not falling prey to your desires. वैराग्येन तो कौन्तेय,
ज्ञान चाहिए, Bhagavan says भगवान अभ्यास के लिए कहते हैं। that you should continue practicing. हो गया? सृष्टि जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम बाबा जी। आपने अभी जैसे बोला So कि question, like you said that having spiritual desires or desires related to Bhagavan, they are not enemies, गोल इन लाइफ, तो and that should एक be our primary goal in life. बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती एक जगह, ना योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्ष वैकुंठ लोके पीन पार्षदत्वम, ये सब तो हमें पता है कि ठीक है, अगर कोई प्रेमी है तो वो कुछ मांगेगा नहीं, पर वो उसके बाद एक So अजीब as सा Shri चीज Vishwanath बोलते हैं Chakravarti कि says प्रेम that अपनी one who is चक्रवर्ती having के prema, he लिए will not ask for प्रेम भी नहीं anything. मांग रहे हैं, तो ये आपकी कैसी आवाज रुक स्थिति गई। है? सॉरी, तो ये कैसी स्थिति है जहाँ पे कि हम प्रेम ही नहीं मांग रहे, जो कि बेसिस है हमारे रिलेशनशिप का एक So बीच में how आप is it that we are not desiring for prema also, which is the वो basis of आप the कैसे करेंगे? relationship? फिल इन द ब्लैंक्स आपको मुझसे पता है बेटर कि प्रेमापि न स्यादिति चेतरंतु, कि प्रेम भी नहीं मांग रहे वो, तो ये कैसी स्थिति है जहाँ पे कि हमारा जो फाउंडेशन है So रिलेशनशिप what का, kind of situation is प्रेम भी this हम नहीं मांग that रहे we भगवान are से? not asking for even the तो कैसी foundation स्थिति of है? our तो relationship, the इंसान का prema काम itself? क्या रहा फिर उस स्थिति में? Then what ये is the किसी का purpose काम है of कि human मांग being? नहीं है प्रेम की? आपकी आवाज बीच में कट कट के आ रही है, ओके, पता नहीं हमारा इंटरनेट। I will write it down. I'll just write it down. But I can't write it down. Well, never mind. Maybe God आवाज doesn't want me to ask. आवाज आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अभी हाँ, अभी तो आपने एक शब्द बोला है, लेकिन पूरा वाक्य बोलेंगे तो पता चलेगा कि पूरा वाक्य सुनता है नहीं। अच्छा, मैं पूछ रही जो मेरी हूँ समझ कि में आया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बीच बीच में आवाज कट रही थी, वो आप पूछना चाह रही हैं कि जो So विश्वनाथ what I could चक्रवर्ती understand is what Sri Vishwanath Chakravarti says, that we should desire only for prem, or people do not desire. that ऐसा is क्यों not what I... होता है, तो वो इस ठीक है, मेरे आपका प्रश्न ठीक से सुनाई नहीं दिया हमें। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जो बोलते हैं कि वो तो सारे प्रकार के मुक्तियों को रिजेक्ट कर रहे हैं और सिद्धि नहीं मांग रहे हैं, बट उसके बाद वो बोल So रहे what हैं कि Vishwanath Chakravarti is saying that अगर आप not asking for प्रेम ही Nisiddhi is mukti, but तो then he is कैसी telling that स्थिति he is है not जहाँ पे asking for कि prem एक also. इंसान Then what प्रेम kind ही of नहीं situation मांग is रहे this रिलेशनशिप का, that भगवान के साथ वही चीज ही नहीं मांग, the वास्तविक में हमें foundational relationship शांति मन that is की prema, प्राप्ति we're not होगी, asking that हमें वो also. दिव्य वस्तु मिल गया जो कि प्रेम है, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, हमें ये सब मिल जाएगा, फिर हम आनंद में रहेंगे। तो ये अनकंडीशनलिटी कैसे आती है रिलेशनशिप में और उसको कैसे कल्टीवेट कर सकता है So how इंसान do कि we वो get प्रेम नहीं unconditionality in मांग the रहा है, उसे relationship, प्रेम से क्या बेनिफिट होगा, बट वो that it प्रेम doesn't से even ask ओनली for फॉर द सेक prema, ऑफ प्रेम? he just... हाँ, तो ऐसा है कि हमारा मन जो है ना, उसमें कामनाएं बैठी हुई हैं। So answer, the issue is ये जो बात that अभी भगवान the बता रहे karma हैं, is seated अगर आप inside the ठीक mind. से चिंतन कीजिए, वो कहते What हैं कि Bhagavan is जो मन explaining here, बुद्धि you should इंद्रिय सब reflect के on ऊपर that काम करता properly. है, कि हमारा मन बुद्धि इंद्रिय सबके ऊपर That काम कर our रहे हैं। mind, our buddhi, जितने भी हम karma is इस seated संसार में हैं, ये सब in क्या all कर that. रहे हैं? ये केवल मेरी और आपकी Bhagavan नहीं, is speaking बहुत सारे about लोग जो all हैं of us in this इस world. संसार में, It's not just ये about you सबकी or यही me. स्थिति है। He's speaking about everyone in this world. तो एक तो ये है कि So मैं इस गीता को पढ़ता one हूँ, point is पढ़ने that का I प्रयास study करता हूँ, Gita and I keep और अब endeavoring तक जो on हमने my पढ़ा own. है वो And ऐसा लगता whatever है we कि discussed till now, उसकी it मूल बात appears like that. हम भूल जाते हैं। But बार one बार तो नहीं कह सकते, fundamental भूल point जाते that हैं we forget, which I कि cannot tell आरंभ all कैसे the हुआ, time, is that how did भगवान this ने Gita begin? जीवन आरंभ कब किया? When did Bhagavan भगवत begin? गीता शिष्यस्ते हम
Gita. He began when Arjun took shelter of Bhagavan. He became the disciple of Bhagavan. He became a student and he requested to Bhagavan to teach. So I have told so many times that whatever is being taught, this is for us. Bhagavan is doing a leela by putting Arjun into illusion so that he gets opportunity to teach us through him. If Bhagavan tells us directly you should take a guru, then you may not accept him. So he is speaking indirectly. So if we have buddhi, then we'll understand that I also have to do this. So, but the reality is that only by one's own endeavor, nobody can disentangle himself from this cycle of birth and death in this world. That's why in our Indian culture, Guru is given such a prominent position, role. जिसका है, जिसका गुरु है, वही जानता है। तो ये मूल बात है जो भगवत गीता में भी आ चुकी है और आगे भगवान This is explained in Gita also. Bhagavan will also say. ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो ये एक बहुत मूल बात है हमारी और हम इसको So this is a very important point and I cannot keep repeating it again and again. So when I understand this much, that on my own endeavor I'm not able to achieve, then we should understand we need help. And I already said that we do have buddhi, we should use that. But along with that, I also said Guru Kripa, Bhagavad Kripa, all these are also needed. That is also essential. Simply by our own endeavor, it is not possible. So, ये आगे भागवत में आता है कि अपने आप होता नहीं है। So this will be explained in Bhagavatam also, that on our own, simply by our own endeavor, we cannot get the knowledge. We have Anadi Avidya, and getting released from that or just by our own endeavor is not possible. For that, you need to take shelter of Guru, Tattvagya, Acharya, whatever you call. So that is the solution. ठीक है, मंगलाचरण। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।